just discussed is about narration of material facts. It's about compliance with law and it's about addressing the court. You have to keep the court that you're addressing in mind. You have to mention the right name of the court. You have to ensure that you are putting the cause title there properly. That is something that we'll discuss in the next slide. You have to make sure that you are in the right place at the right time. You're addressing the court properly. You're writing most respectfully, show it, and then you are narrating the facts in a chronological manner. And in the end, you're talking about how you've complied with the law, and you are eventually making sure that whatever you're filing in court is eventually going to convince the judge that you have a right to approach the court to get the relief that you seek. Or if you are on the other side, if you are defending a case, then you have to convince the court that this case that has been filed against you has no merit, it is filed frivolously, or it does not apply to you, or all those allegations are false. Then the court has to be convinced about that fact as well through your written statement or the reply that you have filed. So you have to keep the end in mind while you're drafting, and the end is the prayer, the relief that you are seeking. As a plaintiff, you will be seeking the grant of your prayer, in the sense that, for example, if your suit is for recovery of a certain amount, then in the prayer clause in the end, in the relief, you will ask the court to grant you that particular amount and direct the opposite party, the defendant, to give you that particular amount. So that is what your entire draft should be about. It has to tell the court how exactly you are entitled to that amount. And for similarly, if you're defending the case that has been filed against you and it is for recovery of a certain amount of money, then your draft, your written statement has to tell the court just exactly how you are not liable to pay that amount. And that should run throughout your draft. That should be in the background, constantly running throughout your draft. And then now we go on to the fact that you are talking about court. You are filing this particular document in the court. So you have to be prepared for the court. You should know the law, and I cannot stress this enough. You should know just exactly which provision you are invoking, under which provision you have the right to seek that relief, and how that applies to the facts of your case. You have to know the facts of your case like the back of your hand. You have to know who the parties are, what has happened, when has what happened, what are the material facts. So you're able to answer everything whenever the judge asks or throws any kind of questions at you, and you have to prepare the paper book. Now, do you know what a paper book is? You must have heard this term, you must have seen this term somewhere in some Supreme Court order, in some High Court orders, High Court judgment, or whatever, that the paper book has not been filed, or the paper book has not been the copy of the paper book has not been given to the opposite party. So what is a paper book? See, the draft that you make, whatever you write, and whatever document you print out and sign and then file in the court, is not the only document that has to be filed. A paper book, and I know Yashodhara, you know this, a paper book essentially contains all the essential starting points, middle points, and the end points of whatever your case is. There has to be an index. The index has to give the particulars of the documents that are in that file. They have to give the page numbers, what is where. After the index, there has to be a page that talks about court fees. So in civil cases, whenever you file a civil case, you have to pay a certain court fee. Majorly in criminal cases, the court fee is exempt. So the court fee doesn't have to be filed by the accused who's defending a case. And of course, the state is the one who's prosecuting. So there is no court fee as such in criminal cases. But in civil cases, there is always a certain percentage
of the total amount that the case is for that has to be filed. So you have to also show the court that you've paid the court fee. After the court fee, you have to give a memo of parties. A memo of parties essentially is a document that gives you the details of who has filed the case, who has the case been filed against, and all of those details are for the purposes of service of summons. Summons is essentially a court notice that goes to the other party that the case has been filed against. So the court will send a notice to the party that this case has been filed against you. This is the paper book. This is the date when you have to appear and you have to give your defense, or you at least have to come and say that, okay, yes, I will come and defend my case, and then you file your written statement. So for the purposes of effective service of summons, you have to have memo of parties. After the memo of parties, the main suit begins. So a paper book is essentially all the documents that are contained when the case is filed for the first time. And if it is a written statement, then it will contain an index, the written statement, the affidavit, and then eventually the list of documents and all the supporting documents that are being filed along with that written statement. Similarly, all the supporting documents that are being filed supporting the plaint have to be in the paper book of the plaint. So all of these documents, they come together, they are bound together, and that becomes a paper book. So you have to prepare the paper book also in accordance with the rules of the court where you're filing your case. And this is majorly more important, way more important in higher courts. It's important in high court, it's important in Supreme Court that the entire paper book has to be served to the opposite party. Now, I keep saying opposite party, but it's not always the opposite party. There are certain specific terminologies that are used for the parties that are present in a particular case. So now we are stepping on to the next phase, which is the beginning of our draft, when we start drafting. Now, in the first 5 minutes, when you'd seen that draft today in the session, you saw that there was the name of the court and there was the name of the number of the case and the name of the parties. Before we talked about the subject matter, that particular portion is called the cause title. And you may think that it's very simple, that, all you have to do is just write the name of the court and the number of the case and that's it. But no, to write the name of the court, the proper court has to be ascertained. For you to be sure which court is the proper court, you have to know which court has jurisdiction. Now, what is jurisdiction? Okay, since we're not left with a lot of time, although I would really appreciate that you write in the chat box and you give me the answers, but I'll quickly just run this through you, and you can, of course, these are some topics and some terminologies that have been discussed at length, even in your law schools, even in the question papers that you get for various exams, various law exams, and a lot of judgments have been passed interpreting the term jurisdiction. Okay, so it's not, I'm sure it's not something that you're listening to for the first time. The jurisdiction, in the simplest of terms, is the power of the court to adjudicate upon a matter. So the court, only the court that has the power to grant you that particular relief will be the court where you will file that case. If the case has been filed without jurisdiction, then the court cannot grant you any relief and your plaint will either be rejected or it will be returned. So you have to first ascertain where the jurisdiction lies. So, for example, a client comes to you and the client says that, I did this agreement to sell pertaining to this property. I entered into an agreement to sell with ABC. ABC is the owner of the property. ABC took 50,000 rupees from me. ABC said that when you pay 50 more thousand, and yes, I'm being very unrealistic right now, but this is just an example, okay? So ABC said
you have to pay 50 more thousand at the time of registry of this particular document, and then this property will be yours. I will name you the owner of the property. I will transfer the ownership to you. Now, I go to the registry with 50 more thousand as per the agreement to sell. I am ready, I am willing, I want to pay the rest of the money so the property is transferred in my name, and ABC doesn't show up. So I go to court. I have to go to court. But before I go to court, of course, I go to the lawyer and I tell the lawyer what my issue is. And I'm very angry, I'm very frustrated. And I tell the lawyer that, okay, now you have to file a case for me and you have to make sure that this person fulfills his promises, fulfills his obligations under the agreement to sell that we had. And that case will eventually, the lawyer will say, okay, yeah, this is specific performance and specific relief act में आएगा आपका ये, और हम इस प्रोविजन के अंडर जाएंगे, हम कोर्ट में जाके ये सूट फाइल करेंगे और ये हो जाएगा ना। आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे? ये कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सी कोर्ट में जाना है? जहां पे मैं रहती हूँ, जहां पे एबीसी रहता है, जहां पे मैं काम करती हूँ, जहाँ एबीसी काम करता है, या जहां पे प्रॉपर्टी है, हम कहाँ पे जाएंगे? So, for those of you who have read about jurisdiction, I'm sure. For those of you who've also gone through CPC, I'm sure you know the answer. Yashodhara, you know the answer. So give me the answer. Where will the jurisdiction lie? The jurisdiction. Yeah, No, where the property is situated. absolutely. You're absolutely right. It is an immovable property we're talking about, and that is why, according to CPC, wherever the property is located, wherever it is situated, the court within whose territorial jurisdiction or local limits that particular property is, that court will have the jurisdiction to entertain this case. So, if my property, let's say, is in Gurgaon, then Gurgaon courts will have the jurisdiction to entertain or to adjudicate upon my dispute. If, of course, there are other intricacies, there are the complexities. For example, there can be a certain pecuniary jurisdiction also, there can be subject matter jurisdiction also. बट हम अभी सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है बिफोर वी बिगिन आवर ड्राफ्ट और एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग आवर ड्राफ्ट. सो दैट इज वाई एक बार पता चल गया गुड़गांव कोर्ट है. अब गुड़गांव कोर्ट में भी देखना पड़ेगा सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा या कौन से जज के पास जाएगा, एडीजे के पास जाएगा, कहाँ पे जाएगा मेरा केस. तो वो पता करने के बाद आई विल असर्टन द नेम ऑफ कोर्ट. द नेम ऑफ द कोर्ट विल बी रिटन राइट इन द बिगिनिंग एट द टॉप ऑफ माई ड्राफ्ट. एंड देन जो केस नंबर आता है, वो केस नंबर कैसे आता है? हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे सिविल सूट नंबर 103, civil suit number this and that, or there are other abbreviations that we have no idea about. There's ARBPT, or there is TPA, or there is SUCC, and ऐसे abbreviations लिखे होते हैं ऊपर. तो अभी जैसे हमने इंफ्रिंजमेंट सूट का देखा था ड्राफ्ट, उसमें तो CS सिविल सूट था, सूट नंबर था. वो नंबर कहाँ से आता है? हाँ ये कहाँ से आता है? I mean, I'm not sure, but like I would like to answer to this question. I mean, when we draft a plaint and then when we go to the court to file it at the court, so I think the person we give it to file, Hmm. that when he like approves or when he sees that there are no defects at the time of filing, he gives us a number. Hmm. Uh, Yashodhara, your video froze. that your Yeah. suit, uh, that Okay, I can't hear you and I can't see you. your client has been instituted. Am I audible? Am I visible? Yes. Am I Yes. audible? Yes. 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 Now go on. So basically, when the person when we go to the court to file that plaint, so he sees that there are no defects in that plaint, and so he institutes that plaint, which is called the institution of the suit, and that is when he gives the suit number, because the number of the case,
and in the year which it has been filed. So if it is a civil suit, so the CS number so and so of Hmm. 2023, and if it is a commercial suit, so then it is com number and the number of that suit of in which year it has been instituted in that court of law, Absolutely. and so Absolutely. on So, yes, and so forth for like IP divisions. It is different and absolutely. So that is exactly where you get the court case number from. And what is the title of your case will depend on what kind of case you filed. So, like Yashodhara told you, you get that number once you file that particular case. So, at the time of filing, at the filing counter, your case will get registered. First, you will get a filing number, which is a temporary number. Then you get a registration number, which is the number that is used at the top of your draft. And that is used everywhere, every time you file anything pertaining to that case, you have to mention the case number. And that is why at the time of drafting, we usually leave that blank. Once we file it, that is when we write the number and the year. So the year तो वही रहता है जिस ईयर में फाइलिंग हो रही है, बट द नंबर कैन चेंज. सो नंबर हम उस टाइम पे ब्लैंक रखते हैं. उसके बाद हम नीचे आते हैं नेम ऑफ द पार्टीज पे. नाउ नेम ऑफ द पार्टीज, लाइक आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन द केस. अगेन, अगर आप एक सूट को फाइल कर रहे हैं, जो फाइल कर रहा होता है सूट को उसको प्लेंटिफ कहते हैं, जिसके अगेंस्ट वो सूट फाइल होता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं. अगर अपील है देन एपेलेंट और रिस्पोंडेंट आएगा. अगर ये एक एग्जीक्यूशन पिटिशन है देन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर आएगा. दे विल बी द नेम्स ऑफ द पार्टीज which is in the legal sense, which is in the legal parlance, and that also has to be identified and specified right in the beginning of your draft. So this versus this. Here you write the name of the party. Here you write the legal identity of the party. कि वो है कौन. अगर आप कंज्यूमर केसेस देखते हो तो कंज्यूमर केसेस में आप देखोगे कंप्लेनेंट होता है और ऑपोजिट पार्टी होती है. देन there can be more than one plaintiff, there can be more than one complainant, there can be more than one defendant, more than one respondent. So अगर there is one more person in that particular category, सो एक से ज्यादा दो दो प्लेंटिफ हैं तो आप लिखोगे दिस एंड अनदर, ANR. लेकिन अगर देर इज टू और मोर देन टू प्लेंटिफ्स तो आप लिखोगे जो पहला प्लेंटिफ का नाम है दैट पर्सन एंड अदर्स, ORS. सिमिलरली डिफेंडेंट में अगर एक और है तो एंड अनदर आएगा, अगर दो से ज्यादा है तो एंड अदर्स आएगा. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट विल बिकम योर कॉज टाइटल. That has to be right at the top of your draft. And then you come to subject matter. The subject matter is essentially what your case is all about. Which provision are you invoking? If you are seeking an injunction under section 37 of specific relief act, if you are seeking a if this is a trademark infringement suit, then section 134 135 of the trademark act, or if it's a copyright infringement, section 51 of copyright act. If it is temporary injunction CPC ke under, then order 39 rules 1 and 2. Or if it is an application for amendment of plain, then it can be order 6 rule 17. Whatever it is. एंड दैट इज समथिंग जो आपको टाइम लगेगा अभी सीखने में, बहुत टाइम लगेगा. एंड दैट इज वाई जो आपके बैरक्स होते हैं वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेंगे एज अ लीगल प्रोफेशनल, वेदर यू गो वर्क इन अ कंपनी, वेदर यू गो एंड प्रैक्टिस लॉ, वट एवर इट इज यू डू, बैरक्स आपके साथ रहेंगे. ऑफ कोर्स अब तो डिजिटल कॉपीज है हर जगह, but I mean personally always prefer to have a physical copy of barracks with me. So you keep going back and forth, you keep referring to the provisions that will be applicable to the facts of your case, and you mention those provisions right in the beginning in the subject matter. And sometimes you also write what relief you are seeking. Like in the beginning we saw it was a suit for infringement and delivery up, and accounts of profit and damages, etc., whatever it is. If it is a suit for let's say it's a breach of contract,
Then you mention, okay, section 73, 74, liquidated damages, unliquidated damages, whatever, whichever section that you're filing your case under, that section will be mentioned right in the subject matter. It is not mandatory. Sometimes it can just be sued for recovery of money, so and so, because there is no particular section for that kind of suit. And you are filing that under CPC. There can be a miscellaneous application that you're filing that has no particular section. उसमें हम section 151 CPC लगा देते हैं, because section 151 CPC has inherent powers जहाँ पे कोर्ट के पास होते हैं, तो उसमें court can grant you any relief that has not been specified in CPC. So we usually invoke the inherent powers by going under section 151 of CPC. So on and so forth. There are various provisions. So उससे आपका कॉस्ट टाइटल बनता है. नाउ यशिका हैज आस्क्ड मी, मैम, who will decide what should be the cost title? You will decide what should be the cost title. You as a draftsman, you who is, for now, I'm going to remove all the middlemen. Okay, I'm not going to talk about your seniors or the judge or anything else. Let's say it's just between you and the client. The client has come to you and told you their problem. For example, let's say Yashodhara is my client. Yashodhara has come to me. I am her lawyer. As I mean, at least I'm hoping to be her lawyer. So she's come to me. This is our first meeting, and she tells me that, ma'am, my husband, God forbid, and this is just hypothetical, that my husband has done these acts. He does not let me be financially independent. He does not let me go out. He tries to uh, force me to just do the household chores and this and that, whatever. Let's say that, this is a hypothetical issue that she's telling me about, and I am counseling her, and I'm eventually, let's say, telling her that, Yashodhara, if you're done with this, and these are the facts of whatever you've told me, from whatever I've heard, and if we are able to prove this eventually, because usko kaise prove karna hai wo hum discuss karenge abhi, but off the top of my head, मुझे ये समझ आ रहा है that हमारे पास जो ऑप्शंस है, हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकते हैं, हम डिवोर्स का केस डाल सकते हैं, हम म्यूचुअल कंसेंट की बात कर सकते हैं डिवोर्स के लिए, पर उसको वहां तक लाने के लिए हमको पहले, आपके पास 498A का भी ऑप्शन है, आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. तो मैं उनको बता रही हूँ क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, और हम डिस्कशंस करते हैं, और मुझे फैक्ट्स पता चलते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मुझे और थोड़ी क्लैरिटी होती है. मैं अपना माइंड मेकअप करती हूँ एज अ लॉयर कि मेरे को अब डोमेस्टिक वायलेंस में फाइल करना है केस. तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस में फाइल करूंगी, ऊपर मैं लिखूंगी मैं कौन से कोर्ट में फाइल कर रही हूँ. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे भी जिस भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, वहां पे डीवी नंबर सो एंड सो आएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया हमको कैसे मिलेगा. उसके बाद नीचे आएगा, तो मैं फाइल कर रही हूँ, तो आई आई विल बी अ पिटिशनर हियर, और आई विल बी, यस, आई विल बी अ पिटिशनर, एंड जिसके अगेंस्ट में फाइल करूंगी दैट पर्सन विल बी अ रिस्पोंडेंट. एंड तब मैं आती हूँ सब्जेक्ट मैटर पे, तब मैं फाइल करूंगी दैट अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पिटिशन फॉर सो एंड सो, वट एवर रिलीफ आई एम आस्किंग. वो मुझे कैसे पता चला? मैंने क्लाइंट से डिस्कस किया, मुझे फैक्ट्स पता चले, मैंने डिसाइड की स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के बाद अल्टीमेटली मैंने वो प्रोविजंस पढ़े, मेरे को पता चला वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं या नहीं. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये केस फाइल करना है फॉर दिस रिलीफ अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट विल बिकम माय सब्जेक्ट मैटर. सो आई होप दैट इज क्लियर, याशिका. इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स. नाउ अभी तो हम बिगिनिंग पे ही थे, आगे भी बढ़ना है हमको, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन एंड बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ इट. नाउ अब हम आते हैं मिडिल पे. अब आपने बिगिनिंग कर दी अपने ड्राफ्ट की, मिडिल पे आपको क्या लिखना है? आपको, आपने वो फैक्ट्स नहीं पढ़े थे उस ड्राफ्ट में जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, बट राइट इन द बिगिनिंग दे वर टॉकिंग अबाउट हु द प्लेंटिफ इज, हु द डिफेंडेंट इज, एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग ऑन टू द क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्ट्स. क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्ट्स का मतलब वो सीक्वेंस में बता रहे हैं दैट द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ दिस मार्क, दिस वाज रजिस्टर्ड and so providing these services, goods, blah blah blah, and then the defendant started using this mark, blah 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 blah, whatever the fact is. So the very first thing that you do is you introduce the parties.
आपने बोल दिया प्लेंटिफ ये है, आपने बोल दिया डिफेंडेंट ये है फर्स्ट टाइटल में, लेकिन वो प्लेंटिफ क्यों, कौन है वो प्लेंटिफ? एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो प्लेंटिफ एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो प्लेंटिफ एक इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, कौन है? उसकी क्या लीगल आइडेंटिटी है? वो किस अथॉरिटी में उसने ये केस फाइल किया, आपको वो बताना पड़ेगा। अगर एक कंपनी है, देन अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, a company being a judicial person will have to have an authorized representative जो उस कंपनी के behalf पर केस फाइल कर रही है, and that authorized representative will have to have some authority from the company saying that the company gives that person the power to file this case on the behalf of the company. So वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, वो सारी फॉर्मेलिटीज टेक्निकलिटीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको बताना पड़ेगा, usually people just write plaintiff as a law-abiding citizen. Although I don't subscribe to it, I don't agree with it, but you're right that the plaintiff is a resident of this particular part, या plaintiff is running this business, so plaintiff को introduce करना है. Then after you introduce the plaintiff, then you introduce a defendant. After you introduce a defendant, you give the connection between the plaintiff and the defendant. How do they know each other? For example, अगर मैं breach of contract का मैंने case file किया है, then मैं बताऊंगी कि plaintiff and defendant entered into this particular contract. The defendant was supposed to do this under the contract. The defendant failed to do that, and that is how they breached the contract. Then you go on to the chronology of facts and everything. A lot of the times, and इसमें कोई hard and fast rule नहीं है. There are a lot of drafts that you will see जहाँ पर right in the beginning, after they've put the cause title, the court name, everything, subject matter आ गया, they introduce the parties, they give the jurisdiction, they give the cause of action right in the beginning, एंड देन दे गो बैकवर्ड्स. सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यूजुअली जो हम इंडिया में प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वहां पे हम सबसे पहले पार्टीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन हम क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्ट्स बताते हैं. अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रही हूँ, मैं बताऊंगी ये पेटिशनर है, ये रिस्पोंडेंट है, इनकी शादी अब हुई थी, उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ. मैं सीरीज में बताऊंगी वो फैक्ट्स, और मैं वही फैक्ट्स बताऊंगी विच आर मटीरियल फॉर मी टू प्रूव माई केस. सो दैट विल देन बिकम द बॉडी of the draft, and that has to be numbered. So the paragraphs जिसमें मैं लिख रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ, सब numbered होना चाहिए. There's a reason why the paragraphs have to be numbered, because they have to be referred to in the arguments in the court. They have to be specifically replied to in the written statement, in the replies, or whatever else the opposite party gets a chance to uh, file in court as a response or as their defense. So उनको बताना पड़ता है in reply to paragraph number 1, in reply to paragraph number 2, so on and so forth. So for it to be easier to refer to those particular facts, it is important and it is necessary that you number your paragraphs. And please remember that हर draft में आप third person में लिखते हो, which means that you are writing, it is, writing something like that the plaintiff was the owner, or the plaintiff was a partner, so on and so forth. So you're writing in third person. आप plaintiff के behalf पे plaintiff के बारे में लिख रहे हो. एंड आप जब भी अपना सेंटेंस स्टार्ट करोगे, आप दैट से स्टार्ट करोगे. ये भी एक प्रैक्टिस है जो चलती आ रही है, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप द से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आप दैट से करते हो. पर हाँ, ऐसा वो नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे कि अगर आपने दैट से नहीं किया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता, बट यूजुअली इट्स लाइक दैट. नाउ यू गो ऑन टू द एंड. द एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्राफ्ट. एंड में ही आपको सारी चीजें बतानी है. जब आप ऑर्डर 6 पढ़ोगे सीपीसी का, आपको, आप देखोगे प्लीडिंग्स को कैसे डिफाइन किया है, रिटन स्टेटमेंट है, सूट है, प्लीडिंग्स है, बता दिया. उसके बाद उन्होंने रूल्स बताए हैं कि क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, आपके प्लीडिंग्स में क्या क्या होना चाहिए. तो उसमें वो बोलते हैं कि आप जब फैक्ट्स लिख रहे हो, आप सिर्फ फैक्ट्स लिखोगे, आप लॉ नहीं लिखोगे अपनी प्लीडिंग्स. मतलब आप कोर्ट में जाके कोर्ट को नहीं समझाओगे कि ये लॉ कैसे इस पे एप्लीकेबल है. लाइक आई सेड दैट यू हैव टू शो इट, यू डोंट हैव टू से इट. अगर मैं बोल रही हूँ, अच्छा, एनी वन ऑफ यू, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आर द 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर यू टू प्रूव अ केस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन? अगर आपको कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन की प्रेयर लेनी है, तो उसमें आपको 3 चीजें कोर्ट को प्रूव करनी पड़ती है एक्स पार्टे टेम्पररी इंजंक्शन में. आई नो कि लॉट ऑफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट का डायरेक्शन which either mandates the party to do something or it prohibits the party from doing something.
तो कोर्ट का अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए, इंजंक्शन चाहिए कि वो डायरेक्ट करे किसी पार्टी को कुछ करने के लिए या उनको रोक के कुछ करने के लिए, तो आपको तीन चीजें प्रूव करनी होती है, तीन इंग्रेडिएंट्स आपको प्रूव करने होते हैं। एक तो कि आपको इररिपेरेबल इंजरी हो जाएगी अगर कोर्ट ने आपको ये इंजंक्शन नहीं दिया। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने केस फाइल किया है एमसीजी के अगेंस्ट, मैं बोल रही हूँ एमसीजी मेरी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देगी, मेरे को केस फाइल करना है, एमसीजी ने गलत एक्शन लिया है। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस एमसीजी आके मेरी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर जाती है, मेरा तो केस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई नीड द कोर्ट to give me injunction, which means that the court should prohibit or restrain or enjoin MCG from demolishing my property during the pendency of the case before it is decided whether that demolition is legally valid or not, whether they have the power to do that or not. So in that situation, मैं इंजंक्शन बोलती हूँ। इंजंक्शन के लिए मैंने बोल दिया मेरे को इरेपेरेबल इंजरी हो जाएगी अगर आपने मुझे इंजंक्शन नहीं दिया। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरी तरफ है, विच मीन्स कि आप अगर मेरे को इंजंक्शन दे देते हो तो उसको उतना नुकसान नहीं है जितना मुझको नुकसान होगा अगर आप मुझे इंजंक्शन नहीं दोगे। दैट इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। एंड ग्रेव प्रेजुडिस, ग्रेव प्रेजुडिस हो जाएगा, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, प्राइम ऑफ फसाई केस है मेरे पास, विच मीन्स दैट एविडेंस में जाए बिना आपको नहीं पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। आप एविडेंस देख के बता सकते हो, लेकिन अगर आप एक प्रीलिमिनरी ग्लांस डालो केस के ऊपर, सिर्फ केस पढ़ो अभी बिना एविडेंस के, तब भी आपको पता चलेगा दैट प्राइम ऑफ फसाई है इन द फर्स्ट इंस्टेंस और ऑन द फर्स्ट लुक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। तो अगर ये तीनों चीजें मेरे केस में प्रेजेंट हैं, देन आपको मुझे इंजंक्शन देना पड़ेगा। अब ये तीनों चीजें मेरे केस में है, ये मैं कैसे बताऊंगी? मैं एक्सप्लेन करूंगी हाउ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन माय फेवर, हाउ ग्रेव प्रेजुडिस और इररिपेरेबल इंजरी विल हैपन, हाउ प्राइमा फेसाई आई हैव अ केस। सो ये सारी चीजें मुझको अपने लास्ट के पैराग्राफ्स में डालनी पड़ेंगी। मुझे कॉज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरे फैक्ट्स बता दिए, तो मैं बताऊंगी कैसे उन फैक्ट्स के थ्रू या उन चीजों के बाद अल्टीमेटली मेरे साथ ये ब्रीच हुआ या मेरे साथ ये इंजरी हुई या मेरे साथ ये गलत हुआ जिसकी वजह से मुझे कोर्ट आना पड़ा। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया इसने मेरे को, दिस पर्सन वाज सपोज्ड टू पे मी दिस मच अमाउंट आफ्टर आई डिलीवर्ड दिस गुड्स, दिस पर्सन डिड नॉट पे मी एंड टिल डेट दिस पर्सन इज नॉट पेइंग मी, एंड ऐसा इंटरेस्ट होता जा रहा है, मेरे गुड्स वेस्ट हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैंने ये सारे फैक्ट्स लिख दिए क्रोनोलॉजी में। अब मैं कॉज ऑफ एक्शन का पैराग्राफ बनाऊंगी एक, वहां पे मैं बोलूंगी कि कॉज ऑफ एक्शन सबसे पहले अराइज हुआ जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जब इसने ब्रीच किया, फिर ये कंटिन्यूइंग है क्योंकि एवरी डे मुझको डैमेज हो रहा है, एवरी डे आई हैव अ रीजन फॉर विच माई राइट्स आर बीइंग ब्रीच्ड, फॉर enforcing my rights, for enforcing my legal entitlement. So that is my cause of action. You give that in one paragraph. Then you give one paragraph justifying how the court has jurisdiction. We discussed what jurisdiction means. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स में आ रहा है तो आपके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, या डिफेंडेंट यहाँ पे रहता है, डिफेंडेंट यहाँ पे काम करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जुरिस्डिक्शन का एक क्लॉज आएगा। देन लिमिटेशन का एक क्लॉज आएगा। लिमिटेशन एक्ट आप पढ़ेंगे 1963 की, यूजुअली सीपीसी के साथ पढ़ाई जाती है, जहाँ पे बोला जाता है कि अगर एक पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर टाइप का केस फाइल हुआ है, दैट केस कैन नॉट बी एंटरटेन। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ यू स्लीप थ्रू योर राइट्स यू डोंट हैव अ राइट टू एनफोर्स दैट राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मनी सूट, आपका आपके पैसे कोई आपको ओ करता है, आपने 3 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया उस इंसान के अगेंस्ट, उसने आपको पे बैक नहीं किया, आप 10 साल बाद उठ के नहीं बोल सकते कि उसने मुझसे तब पैसे लिए थे और उसको मुझे आज वापस करने चाहिए। आपका 3 साल में वो राइट ऑफ रिलीफ खत्म हो गया। दैट इज योर लिमिटेशन। सो यूल ऑल्सो हैव टू डिक्लेयर, you'll have to take an undertaking, give an undertaking to the court saying that I am within limitation. मैंने ये जो भी फाइल किया आई एम विद इन लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन में मैं नहीं हूँ तो मेरे को इतने दिनों का डिले है और इतने दिनों का डिले आई एम सीकिंग कॉन्डोनेशन फॉर। देन यू गो ऑन टू प्रेयर। प्रेयर इज द मेजर क्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, जहाँ पे आप फाइनली बोलते हो कोर्ट को दैट आपके पास ये पावर है टू adjudicate अपॉन दिस मैटर and you grant me this prayer. You give a pass a decree allowing this suit, or pass a decree for recovery of this amount, or pass a decree for delivery up, or pass a decree for accounts of profits, and so on and so forth, whatever relief it is that you are seeking.
Now, once again, I am asking you